सो फाइनली डेल इंस्पिरॉन 5515 आ चुका है और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख ही चुके होंगे और उस पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या देखने को मिलती है। वैसे राइजन सीरीज के लैपटॉप्स में तो गेमिंग परफॉर्मेंस बैटरी मिलती है, बट देखते हैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी क्या देखने को मिलती है। और अगर आप 60,000 के बजट में एक डेल का लैपटॉप परचेज करने जा रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शूट स्मार्ट 2.0। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Audio Jungle. सो गाइस, गेम प्ले करने से पहले इस लैपटॉप की बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। इसमें प्रोसेसर मिलता है AMD Ryzen 5 5500U, जो कि AMD की 5th जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर है, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.1 गीगाहर्ट्ज़ और हेक्सा-कोर प्रोसेसर है, जिसमें लॉजिकल प्रोसेसर 12 मिलते हैं। मेमोरी की बात करें तो इसमें मिलती है 8GB की DDR4 रैम, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर वर्कड है। और स्टोरेज मिलता है इसमें WD की NVMe M.2 SSD 512GB की, जो कि काफ़ी अच्छी SSD आती है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें Wi-Fi 6 का सपोर्ट है। और इसके साथ ही इसमें ग्राफिक्स मिलते हैं AMD के इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्स, जो कि एक 7 कोर ग्राफिक्स है, जिसमें आपको 512 MB की डेडिकेटेड मेमोरी मिलती है और 4GB की शेयर्ड GPU मेमोरी मिलती है। तो टोटल 4.2GB की GPU मेमोरी मिलती है। तो देखते हैं इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी क्या मिलती है। सबसे पहले खेलते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 और मैं AC पावर और बेस्ट परफॉर्मेंस मोड पे गेम प्ले करने जा रहा हूँ। Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a She misunderstanding. fucked up brick in my bed. You bullshitting. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! You okay, homie? What happened? The guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. Tennis coach? Oh, that's fucked up, man. Rich dudes, homie. You know, back in the hood, man, we gotta watch out for the mailman, dog. Yeah, What the? I'm a cuckold, a snob, and a fucking cliche. He gone left. There's that little prick. The fuck is he? You fucking trash, homie. Prick. RB asshole. Fuck, man, I think we lost his ass. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Where the fuck is he? Okay, this is the turn. Hey, you know, one of these fucking houses. That's his car, right there. Little prick's up there, look. Oh, shit. Coach doing all right for himself. Man, I think this shit's coming down, man. Oh, hell yeah, homie. You know what time it is. Are you fucking serious? Yeah! Huh, come on! Fuck, man. Fuck. Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. सो GTA 5 का गेम प्ले तो काफ़ी सही चल रहा है। आपको 50 फ्रेम की फ्रेम रेट मिल जाएगी। और अब इसमें एक रेसिंग गेम प्ले करके देखते हैं, नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट।
NFS में भी ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है और रेजोल्यूशन भी HD रेजोल्यूशन है और ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। फ्रेम रेट अराउंड 60 फ्रेम के समथिंग मिल रहे हैं, तो आप इजीली गेम प्ले कर सकते हैं रेसिंग गेम्स के लिए। सो अब हम इसमें एक एक्शन गेम प्ले करके देखते हैं। TPP गेम है, स्पेक्स ऑफ द लाइन। All right, remember, this place has been designated a no man's land, which means we're not supposed to be here, so let's do this by the books, okay? Roger, Dodger. Okay, grab some cover. Wow. What happens in Dubai stays in Dubai. Come on, let's just find a way down. You got it. Whee! That's enough, Lugo. I'm just keeping it light, boss. Yeah, I don't need light. Need you focused on the mission. What mission? We're basically poking a dead dog with a stick. We have our orders. Locate survivors, leave the city immediately. Radio command from outside the storm wall. Hold your fire! Send in the cavalry, we go home. Hey, did you guys hear that? You fucking with us? I am hurt that you'd even ask. Ain't nobody here, man. Sounds like the transmission. Huh. I could have sworn I heard somebody. Come on, let's just get this over with. Hey! Anyone out there? Soccer says what? Leave it alone. No one's out there. Then what the fuck are we doing here? Lugo's got a point. Are you taking his side now? When he's right, he's right. Hey, command wants us to look around, we look around. I don't know. Sounds like a waste of 3 stone-cold, ruggedly handsome Delta operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I prefer my beaches with a 3-to-1 sexy lady dead body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. You know, it does feel like we're being watched. Good. Someone should see how sexy I look in the job. This looks like the place. Yep, this is what we're looking for. Whatever it is. What's that supposed to be? It's a distress beacon by the late military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. Push comes to shove, shoot out. These guys, they're refugees, survivors of the storm. That's good, right? We should radio command, give them the news. Be my guest. I'm sure they'll stop shooting so you can make a phone call. Gentlemen, less talking, more shooting! Target down! On your left, more coming over the dune. Yeah. Heading out, watch my back. Empty that bus! सो TPP गेम्स में भी फ्रेम रेट अराउंड 50 FPS के समथिंग मिल रही है, तो काफ़ी अच्छे से आप HD पे गेम प्ले कर सकते हो। TPP में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस, गेम प्ले के बाद इस लैपटॉप के बेंचमार्क भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़र बेंचमार्क परफॉर्मेंस टेस्ट देख लेते हैं। AMD Ryzen 5 5500U को 74% रेटिंग मिली है, वेरी गुड है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। रेडियन ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस सही नहीं बता रहा है बट ओवरऑल मुझे सही परफॉर्मेंस मिली थी। स्टोरेज की बात करें तो SSD की परफॉर्मेंस 144% आउटस्टैंडिंग है और मेमोरी की बात करें तो इसमें रैम मिलती है सैमसंग की जो कि 34% एवरेज से कम बता रहा है, बट XMP इनेबल करने के बाद आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हो। और बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो Geekbench 5 से इसको मिला है CPU को सिंगल कोर के लिए 907 और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में इसको मिला है 3396 जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप इसके स्पेक्स देख सकते हो। इसकी प्रोसेसर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.04 गीगाहर्ट्ज़ है और इसकी टोटल कैश मेमोरी 11 MB है। और यहाँ पे आप इसके सारे सिंगल कोर स्कोर्स देख सकते हो।
मल्टी कोर के लिए सारे स्कोर यहाँ पे दिख रहे होंगे। जीपीयू परफॉर्मेंस कोर्स की बात करें तो इसमें OpenCL API पे मिला है 6310, जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर वल्कन API पे जीपीयू स्कोर्स की बात करें तो इसमें 6669 स्कोर मिला है इसको, ये भी काफ़ी सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम रेट काफ़ी अच्छी देखने को मिली। और ऑडियो की बात करें तो इसमें डोल्बी साउंड मिलता है, जिससे ऑडियो क्वालिटी काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, इंटीग्रेटेड स्टीरियो स्पीकर्स की भी। सो गाइस, मैंने इस लैपटॉप में गेम प्ले करके देखा और इसकी परफॉर्मेंस कोर्स टेस्ट किए। ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने वैसे ही मिली है, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। फ्रेम रेट आपको 50 FPS तक मिल जाएगी और काफ़ी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस रहा। इसमें HD रेजोल्यूशन पे आप गेम प्ले कर सकते हो, वो भी काफ़ी स्मूथ फ्रेम रेट पे। और इसमें आप GTA 5 भी HD रेजोल्यूशन पे प्ले कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप एक मिडिल सेगमेंट का लैपटॉप परचेज करने जा रहे हो 55,000 के अराउंड बजट में, डेल ने भी रिसेंटली में जो 5000 सीरीज के लैपटॉप लॉन्च किए हैं वो लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके साथ ही अदर ब्रांड से कंपेरिजन करा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें वेबकैम शटर मिलता है और फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी इसमें आपको अवेलेबल है। इसके साथ ही बैकलिट कीबोर्ड का सपोर्ट मिलता है। तो इसमें आपको सारे फीचर्स लोडेड मिलते हैं और इसके साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको पार्टियली मेटल बिल्ड मिलता है इसमें। तो ओवरऑल इस लैपटॉप की रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आपके लिए 55,000 बजट में बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वैसे तो ये वाला लैपटॉप 58,000 के समथिंग लॉन्च हुआ था, बट अभी ऑफर सेल में इसकी आपको प्राइस 55 से 56,000 के समथिंग मिल जाएगी। तो इस बजट में ये वाला लैपटॉप अभी काफी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप परचेज कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस लैपटॉप की रिगार्डिंग मैंने सारी डिटेल्स क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपको क्वेश्चंस और डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताएं, मैं ऐसे अब आपका रिप्लाई करूंगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग लेटेस्ट डिवाइस के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.